Okay, so the topic today that we are going to do is topic 1.2 factors of production. Right. So, first things first, factors of production. ठीक है जी, if you have to define it, so these are basically the factors which are used to produce goods and services. अब आता है which you were talking about, that which are what are the four factors of production? So those are land, labor, capital, and enterprise. First of all, if we talk about land, land is all the natural resources. What could be the example for land? बताएं जरा. सर ये कुछ भी हो सकता है टिम्बर ठीक है. और Seas, कोल वगैरह rivers, trees, timber वगैरह जिससे आ गया, coal, plants, minerals. ठीक है, all of them could be considered as land. Then labor. If you have to define labor, how would you define it? सर द मैन पावर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स ठीक है. अच्छा, I will write it here. The mental and physical efforts involved in production, which includes, let's say, there could be many examples for labor, like the bank manager, steel worker, university professor. All those are laborers. Now we talk about the capital. Anji, what is capital? और द मनी इन्वेस्टेड अच्छा, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस. अच्छा, वो पैसा इन्वेस्ट किस फॉर्म में किया, मतलब कि जी पैसा सर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया तो क्या उससे बाय क्या किया? मशीनरी मशीनरी वगैरह वगैरह. हाँ, ठीक है. So basically in economics when we write the definition for capital, so हम money invested in business कह सकते हैं, but usually जो definition follow होती है इसमें, that is the human made resources used to produce other goods and services, right? For example, machinery, toolkit. Agreed? जी सर Perfect. Okay, now moving forward to the next one, that is enterprise. But enterprise ki there are certain characteristics. No, there are certain characteristics of enterprise which you need to know. क्या characteristics होते हैं enterprise रिस्क में? बेयरिंग एबिलिटी Very good. सर ये Entrepreneurial. इकोनॉमिक्स में रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होती है या बस वो हाँ, रिस्क जनरली बेयरिंग स्पीकिंग एबिलिटी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी.
risk नहीं, वो bearing कई जगह पे ability. लिखा होता है ना, फला कोई कंपनी का नाम XYZ एंटरप्राइज होता है, वो क्या होता है फिर? Enterprise is the business now. Entrepreneur is the person who is running that business. तो सर एंटरप्राइज की डेफिनेशन फिर क्या होगी? रिस्क बेयरिंग या बिजनेस? हाँ, जब when we are talking about the enterprise ना हम तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और फिर हम what we say is कि the person who organizes the other factors of production is known as the entrepreneur. तो enterprise में we start directly कि जी willingness and ability of an entrepreneur to organize production, bear uncertain risks और make decisions. तो ये ability है of an entrepreneur. Enterprise start karna is an ability. So willingness and ability to organize production, bear uncertain risk, and make decisions. So there are three things that the entrepreneur is doing. ठीक है? अच्छा, so what are those three things? Let's just mark them. They are organizing production. By organizing production, what do I mean is basically organizing or combining all other factors of production like land, labor, and capital. Okay. Second is that they bear uncertain risk. And third is that they make decisions. ठीक है जी. Decisions. अच्छा. The person who organize the other factors of production and there is no need to write again is known as, just to keep it short, entrepreneur. ठीक है जी. इसमें we have examples like Steve Jobs, Bill Gates, so all those entrepreneurs. हाँ जी, is it clear? जी सर। Clear? जी सर। Good. अच्छा, now we are going to talk about the factor rewards. If you are providing land, if you provide labor, if you provide capital, if you provide enterprise, so what are the rewards? So first of all, rent is the reward for providing labor. Sorry, land. So owner of land
requires rent or receives rent to supply resources to firm. Then wage. People supply labor in return for payment. ठीक है ना? उनको वेज या सैलरी जो भी मिलती है उसके अगेंस्ट दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज. Capital pay, you get the interest. And interest is paid to people who supply or invest capital in firm. Usually the investment of the capital in firm. जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उसके ऊपर दे आर गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट फॉर दैट. ये जैसे कि लेट्स सपोज बैंक इज प्रोवाइडिंग यू द लोन for your investment purpose, so they are going to receive the interest against it. Enterprise, the reward is the profit. So this is the reward for an entrepreneur for successfully organizing production. Got it? जी सर। हाँ जी, क्लियर है जी. ठीक है. जी सर। Okay. Now we will be moving forward to some other definitions, which are very basic, very easy. Consumption. हाँ जी, if you have to define consumption, क्या करोगे define? कंजम्पशन को Yes, consumption. पता नहीं Consumption क्या होती है वैसे उर्दू में बता दो. सर, जो भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं। Yes, using up of goods and services, simple. और इसका पर्पस क्या है? To satisfy the human needs and wants. इसी वजह से हम कंज्यूम कर रहे हैं. Because there is a purpose for consumption, na? That is to satisfy your human need or a want. It could be anything, na? You consume the needs and the wants both. There are certain goods which fulfill your needs, certain goods which fulfill your wants. Buying a car, utilizing it, comfort area, that is, more sort of a want. Whereas a human need could be the food that he is utilizing. Using up जी सर। of goods and services to satisfy human needs and wants, right? जी सर।
So using up of goods to satisfy human needs. So there are two things to this. Using up of goods and services to satisfy the needs and wants. Consumer goods. These are the goods which satisfy, again, the needs and wants they satisfy. कोई इसमें there's nothing different. Which are, but एक difference है कि these are used by the end consumers who are not going to use the product to make another product. It is just for the end consumer who wants to consume the good. Acha, in consumer goods, there are two types to it. Do you know what are those types, consumer goods की? नहीं सर। Durable goods? जी सर। What are नॉन durable ड्यूरेबल goods? दूसरा, हाँ, second is the तो जो non-durable. काफी देर चलते हैं। Yes, which lasts for a long time, तो वो durable होगी. Which lasts for a long time. For example, तो मुझे. हाँ जी, कोई एग्जाम्पल ड्यूरेबल गुड की. सर सर कोई भी दे दूं? हाँ हाँ, जो goods which you know they are used for a longer time period, long lasting products हों सर कोई भी फोन। चीज जो. यस, फोन, वेरी गुड. हाँ। ठीक है, कार, फोन वगैरह, these are the things which you use for a longer time period. Okay. Now the second one, as you said, are the non-durable goods. Why they are considered non-durable is because they perish. So these are perishable goods, which are used up quickly. So you quickly use them up. For example, food, drink, etc. Now we will move on to consumer services. These are the professional services demanded by consumers. For example, services of doctors, teachers, etc. ठीक हो गया. जी सर। Okay, next topic that we have is the conservation versus exploitation. अच्छा, ये दो concepts हैं. First, I'll write down here conservation. Conservation of resources means saving the resources for future use.
This refers to saving resources for future use. Like for example, you are making capital goods. What will happen with this is that you will be able to produce the consumer goods with the help of these capital goods in future. तो ये जरा फ्यूचर के perspective से बात की गई है कि कैपिटल गुड्स को यूज करके what you can do is that you produce the consumer goods in future. That is conservation. On the other hand, exploitation. That refers to using up all resources for production. For example, मेकिंग कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, ये आपकी करंट जनरेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ये प्रेजेंट को देखें क्योंकि जो भी आपके कस्टमर्स हैं दे आर गोइंग टू यूज द गुड्स टुडे. इफ यू मेक कंज्यूमर गुड्स दे विल यूज इट अप. बट इफ यू मेक कैपिटल गुड्स तो आप फ्यूचर का पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं कि एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे अपने सारे रिसोर्सेज को इन मेकिंग द कंज्यूमर गुड्स जो कि अभी यूटिलाइज हो जाने. तो हाउ द यू विल कोप अप विद द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इन फ्यूचर. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. Yeah. ओके, सो मेकिंग द कंज्यूमर गुड्स, अगर आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स बनाने में जो अभी यूटिलाइज हो जाएंगे. कंजर्वेशन इज सेविंग द रिसोर्सेज. हाउ यू आर मेकिंग द कैपिटल गुड्स आउट ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ द रिसोर्स. रिसोर्स वहां पे भी यूज हो रहा है पर उनसे आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में लेट्स सपोज आपने मशीन्स वगैरह बना ली तो यू कैन प्रोड्यूस मेनी मोर कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम दोज मशीन्स इन फ्यूचर. सो व्हाट as a state, what you need to do is कि there must be a balance between the two. ठीक है, तो a balance between the two मतलब कि you are making both the consumer goods भी and capital goods भी. Right. ठीक हो गया. Now we are moving forward to our next topic, that is mobility of factors of production. This is factor of production. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द
Definition is of factor mobility. What is factor mobility? This is the ease with which resources or factors of production can be moved from one place or occupation to another place or occupation. So there are two things in the factor mobility. One is कि कितना आसानी से आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव करते हैं फ्रॉम ease with which you move the factors of production from one place or occupation to another. इसकी दो टाइप्स हैं, geographical and occupational. Geographical mobility is when the ease with which resources can be moved from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह when you can move your factors of production is known as to be geographical mobility. एक जगह से लिए और दूसरी जगह पे ले गए आपके कितना आसानी से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर सकते हैं. Occupational mobility is ease with which resources can be moved from one industry to another. कि एक इंडस्ट्री से उठा के अपने रिसोर्स को आप किसी और इंडस्ट्री में अगर यूटिलाइज करें तो क्या वो इतनी आसानी से यूटिलाइज हो सकते हैं या नहीं. इट डिपेंड्स. मूविंग देम फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री. ठीक है. इसको जरा देख लें बोले. देख लिया सर। Okay, let's just move on to the next part. Acha, here we are going to make a table. And this table is of mobility of factors of production. We have the factors. हम अब reasoning लिखेंगे. With all the factors of production separately के land mobile है geographically या immobile है, ये हमने देखना है. Geographical mobility and then the occupational mobility.
First of all, land. Then we have the labor. Then we have the capital. Then we have the enterprise. Achha. I'm going to form a table from here. For land, for labor, for capital, and enterprise. Achha, bete, when we talk about land, is it geographically mobile, like you can move the land from one place to another? Geographically, क्या आप physically आप land को move कर सकते हैं दूसरी जगह? नहीं सर। Exactly. So it is immobile, no? यस। Can't be moved physically. Whereas when we talk about occupational mobility, क्या land mobile है? मतलब if you are using the land for one particular purpose and now you are using it for another, सर मोबाइल। mobile है जी मतलब कि सर। you can move the land. ठीक जी है, सर। ठीक है. So let's say you can use the uh, occup मतलब move तो नहीं कर रहे, but that is occupational mobility, meaning that you can use the land for different purposes, ना number of purposes के लिए. If first of all on that particular land there was a hospital built, now you can if whatever the reason now the hospital is no more in that building, so you can also have a school there, isn't it? So it जी सर। can be used for number of purposes. Whereas when we talk about the labor can move from one place to another. जी सर। ठीक है, यूजुअली तो वो मोबाइल है, बट लेबर इमोबाइल भी हो सकती है कि could there be a reason that they are not able to move from one place, let's suppose from one country to another? नहीं सर। कोई रीजन ऐसी नहीं हो सकती कि वो मूव नहीं कर रहा. सर वो कंपनी उसके उतना ही वेज बढ़ा देती है तो बंदा वैसे चला जाता है। हाँ, दैट इज वन थिंग, बट देन देयर आर अदर फैक्टर्स ना जो कि वो देखेगा. लेट्स सपोज फैमिली टाइज, कि वो फैमिली कभी से हो। हट के नहीं जा कब सकता रेयर कभी केस ही कभी. हो सकता है सर। हाँ. फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अच्छी जॉब की इंफॉर्मेशन नहीं है किसी कंट्री में, आपको आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, आप नहीं जा सके.
डिफरेंसेस इन एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आप प्रॉब्ली अप्लाई नहीं कर सकते। लैंग्वेज बैरियर कभी कभी आ जाता है। ठीक है, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग कैसी है वहां पे, अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो जितने पैसे वो कमाने जा रहा है, एंड इफ ही इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ दैट ऑन द द हाउसिंग, बिकॉज उस जगह पे हाउसिंग बड़ी महंगी है, तो ही वुड प्रॉब्ली नॉट गो। ठीक है, पे देन दे कुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ वर्कर्स भी तो हो सकते हैं, लाइक लैंग्वेज का इशू जो मैंने अभी बोला, लैंग्वेज बैरियर है, या वर्क वीजा नहीं मिल रहा, तो दैट कुड ऑल्सो बी एन इशू। अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लाइक switching jobs from one occupation to another occupation, क्या ये लेबर कर सकती है? जी सर, कभी कभार। कभी कभी कर सकती है, कभी नहीं भी कर सकती। ओके फाइन, आई गेट इट। मोबाइल कौन सी लेबर होगी, क्या लगता है कि स्किल्ड वर्कर्स आर मोर मोबाइल देन द अनस्किल्ड, या अनस्किल्ड वर्कर्स ज्यादा मोबाइल अनस्किल्ड होते हैं, मतलब कि वर्कर्स। वो डिफरेंट? यस, बिकॉज वो देखो ना, इफ ही इज एन ऑफिस बॉय ही कुड आल्सो वर्क इन अ ग्रोसरी स्टोर, fixing the shelves or all those things. So unskilled labor can get the job very easily because there is more availability of the unskilled, vacancies. So this could be one reason. Whereas it is more sort of immobile for the skilled worker, कि वो if he's a doctor he can't be an engineer now. तो वो कोई और skilled work जो है probably ना कर सके. Not always, but in some cases. अच्छा जी, capital. Can you move the machine from one place to another? जी सर। Okay. So capital is mobile, can be नहीं moved. सर। नहीं sir, अभी तो कहा था जी सर, मशीन को मूव तो कर सकते हैं ना, मतलब कि बहुत हैवी हाँ मशीन जी अगर सर। नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली मूव इट। अच्छा, जी सर। ऑक्यूपेशन ऑफ द मशीन, मशीन में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक बात याद रखना। तो क्या मशीन्स जो हैं, कोई कंप्यूटर्स वगैरह ये चीजें, या कोई और कोई लेट्स से कोई प्रोडक्ट मेकिंग मशीन, कुछ मशीन्स ऐसी हो सकती हैं जो मोबाइल हों, कि एक ऑक्यूपेशन में यूज हो रही हैं, फिर किसी और ऑक्यूपेशन में भी सेम मशीन यूज हो जाए? नहीं सर, कुछ होती हैं जो नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, जो हो सकती हैं वो कौन सी हैं? कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, लाइक आप स्कूल में भी हाँ जी सर। कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आप करते हैं। तो इस तरह की मशीनरी, अगर इस तरह की चीजों में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, या कैपिटल में आपका फर्नीचर वगैरह आ रहा है, दैट आई गेस इज इज मोर मोबाइल, बट इमोबाइल भी होती हैं। लेट्स सपोज टॉय मेकिंग मशीन है, and you want to shift that machine to making cars, इमोबाइल हो जाएगा ना। रियल कार्स वो नहीं बना सकती, जो टॉय मेकिंग मशीन है वो स्पेसिफिकली कैन ओनली मेक द टॉयज। जी सर। एंटरप्राइज के बारे में क्या ख्याल है? ज्योग्राफिकली एन एंटरप्रेन्योर इज मोबाइल, कैन ही डू बिजनेस इन डिफरेंट प्लेसेस? जी सर। तो इट डिपेंड्स ऑन द skill of the entrepreneur, like it is easy.
अच्छा, it is easy नहीं, it depends on the skill कि वो कितना ज्यादा उसका skill set है, or the experience or the money he has to, you know, move from one place to another to do the business. Then again, if we talk about its occupational mobility, ये भी है. A businessman can do different businesses. ठीक है, again it depends on his skills कि क्या वो एक business कर रहा है and can he now move into another business and start that as well, जी सर। right? So that can also, you know, test his mobility. अच्छा, इसको देख लो इसको. अच्छा, you have to write all of this down in your workbooks as well. Workbook तो अभी नहीं है तो whenever you have it, so you will have to do that as well. Okay, now we are going to move on to the next topic, that is the quantity and quality of factors of production. So we have, you know, the factors, जो कि हमारे factors of production. Then how can factor quantity be increased and how can factor quality be increased? कि फैक्टर प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लैंड. लैंड की क्वांटिटी बढ़ सकती है, लाइक द लैंड जी अवेलेबल सर। टू यू, जैसे कि न्यू डिस्कवरीज कर लें नेचुरल रिसोर्सेज की. देन लैंड की क्वांटिटी ऐसे भी बढ़ सकती है. लैंड ऑल्सो इंक्लूड, यू नो, प्लांट्स. ठीक है, इफ यू प्लांट मोर ट्रीज तो टिम्बर भी मिल गया और प्लांट से भी यू कैन मेक द मेडिसिन एंड अदर थिंग्स. Then if you are using the unused or untapped resources जिनको आपने पहले नहीं यूटिलाइज किया था, तो अब आप उनको एक्सप्लॉइट मतलब कि एक्सप्लॉइटेशन करके, एक्सट्रैक्शन सॉरी करके आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. Then if you increase the rent of the land, so there might be people who would be willing to, you know, provide their land, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग इट टू समबडी के वो उसका रेंट पे करके उसको यूटिलाइज कर ले. Persuade landowners to provide land. ठीक है. अच्छा, लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करना, लाइक बेटर लैंड मैनेजमेंट, improve soil condition, राइट? अगर लैंड, और ये सारा, यू नो, दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर साइड ऑफ द लैंड, जहाँ पे हम लैंड मैनेजमेंट करके
सॉइल कंडीशंस improve कर सकते हैं. We break down the land into, you know, small pieces so that it can be easily managed. Then new technology improves resilience of land, sorry, resilience of plants, ठीक है, अगेंस्ट ड्राउट. इससे भी प्लांट्स जो हैं ज्यादा रेजिलियंट हो जाएंगे अगेंस्ट द ड्राउट, तो फिर इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी. देन रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल्स, इससे भी लैंड की क्वालिटी बेहतर होती है. एंड देन यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, जिसमें आप पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, दैट यू कैन डू. राइट, दिस इज फॉर द लैंड. देन फॉर द लेबर, लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है. इफ वी इंक्रीज देयर वेजेस, उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं जाएगी. इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज, तो उससे भी लेबर इज जी गोइंग टू सर। रिटायर लेट, तो फिर उससे भी बढ़ जाएगी. देन जी सर। यू नो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, तो उससे फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर बढ़ जाती है. जी सर। स्पेशली दिस पॉइंट इज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन. तो उससे क्या होगा कि दे विल बी मोर वर्किंग वुमेन वर्किंग, तो फिर इससे हमारी ओवरऑल जो है वो बढ़ जाएगी लेबर की क्वांटिटी. लेबर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? इफ यू प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, और या फिर जी आप सर। उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उससे भी क्वालिटी ऑफ लेबर बेहतर होगी. आपके पास स्किल लेबर ज्यादा आएगी. देन वी हैव द कैपिटल. कैपिटल में आप क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन बी इंक्रीज, राइट. इंटरेस्ट पेमेंट्स आप इंक्रीज कर दें, उससे क्या होगा कि मोर पीपल विल बी विलिंग टू प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अब उनको हायर इंटरेस्ट मिलेगा. और कैपिटल इस तरह से भी बढ़ सकता है कि सिंपली यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स, जी सर। तो ज्यादा मशीन्स टूल्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे. कैपिटल की क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है? कि मशीन अगर एडवांस हो, ठीक है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन करें, थोड़ी उसको इम्प्रूव करें, ठीक है ना, बिकॉज दिस विल इम्प्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Then comes the last one, enterprise. एंटरप्राइज की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? कि देर आर मोर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है. आई जस्ट नीड टू जस्ट बिकॉज आई हैव टू पुट अ लाइन हियर. एंटरप्राइज की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? गवर्नमेंट फाइनेंस, स्मॉल एंड large scale businesses, गवर्नमेंट फाइनेंस, स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस, उनको फाइनेंस किया जाए, दैट कैन इंक्रीज द एंटरप्राइज. एंड सेकेंडली
क्वालिटी, ठीक है, उनको फाइनेंस करेंगे तो ज्यादा लोग, मोर पीपल विल बी विलिंग टू स्टार्ट अप देयर बिजनेस बिकॉज नाउ दे विल हैव मनी, क्योंकि मनी इज द मेन फैक्टर जो कि स्टार्टअप नहीं कर सकते बिजनेसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? ट्रेनिंग कोर्सेज हों रिगार्डिंग हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये सारी चीजों पे उनको डिटेल दी जाए। सेकेंडली, business counseling can also be done, और यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस कि हाँ जी कौन से बिजनेसेस मोर प्रॉफिटेबल एंड लेस रिस्की हैं फॉर द एंटरप्रेन्योर, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो उससे क्या है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, दे विल बी बेटर एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे हैव द गुड काउंसलिंग, राइट? अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस एज वेल। ओ गॉड, आई नीड टू मेक इट अगेन। ओके, सो ठीक है, so we have the factors. We have discussed about the land. We have discussed about the labor. We've discussed about the capital and the enterprise. Right? So this is it, and we are done with this chapter. Right? So in the next class, we will be starting off with the new chapter when you will have the workbook, so you can also do these questions as well. I will recommend you that. Okay, so one thing that you can do as part of your homework is you do these MCQs on this ठीक है particular सर। chapter. Uske liye to you do not need the paper pattern stuff now. Paper pattern will do in the coming classes, right? ठीक है सर। So that you can easily do here. So this is it about today then.